Today we will discuss electromagnetic induction. Chapter 6, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. We will revise this chapter. In short, we say EMI. EMI. So first in this chapter, we will discuss magnetic flux. Magnetic flux. What is magnetic flux? Magnetic flux is the number of magnetic field lines normally passes through a surface. Suppose there is a surface, how many magnetic field lines normally means normal to the surface, passes it. Suppose the 4 lines are passing through it, the magnetic flux is 4. The number of magnetic field lines normally passes through any surface is known as magnetic flux. It represented by phi b. The phi b is equal to b dot a, or we can say b a cos theta. Theta is angle between magnetic field and area vector. Now question arises, what is area vector? After this topic I will discuss, but you should know it is the angle between magnetic field and area vector. What is its SI unit? SI unit is Weber. SI unit of flux is Weber. In short, we say WB. Is it a scalar or vector quantity? It is a number of magnetic field lines. Number 1, 2, 3, 10, 11 lakh, 1 lakh. It is a quantity. So it is a scalar quantity. And second thing, it is a dot product. So it is a scalar quantity. You should remember it. Is it right? Now question arises, what is area vector? What is area vector? Area vector is the vector normal to the plane. किसी भी प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं. सपोज ये बोर्ड है हमारा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, नॉर्मल टू द प्लेन. इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes in this direction in my hand and through this board, so what will be theta? 0, because magnetic field lines and area vector both lie in same direction. Or if suppose magnetic field line in this direction, for this plane theta will be 90 degree or flux will be 0. Is it right? So what is the area vector? Area vector is the normal to the plane, perpendicular to the plane. The normal vector to the plane is known as area vector. Is it clear? What is magnetic flux? Now I will discuss electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? What is the meaning of this word electromagnetic induction? इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? What is the meaning of electromagnetic induction? Electromagnetic induction means electricity, means electric current or EMF induced due to magnetism, due to magnetic field. Due to magnetism, induction of EMF or current is known as electromagnetic induction. Electricity induced due to magnetism. Okay, so there are law of electromagnetic induction. We say Faraday's law of electromagnetic induction. First law is, if there is a change in magnetic flux, if there is change in magnetic flux link with a coil. Link with a coil का मतलब है, ये सपोज कॉइल है, इससे लिंक, इससे जो क्रॉस हो रहा है, इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल, कॉइल से जो हमारी फ्लक्स लाइन पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन, अगर उसमें चेंज हो रहा है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड इंड्यूस्ड एन ईएमएफ और करंट विल इंड्यूस्ड.
EMF और करंट विल बी इंड्यूस्ड। देखिए दोनों एक साथ इंड्यूस्ड होते हैं। अगर सर्किट हमारा क्लोज होगा तो दोनों होंगे, EMF भी होगा, करंट भी होगा। इफ सर्किट इज ओपन देन ओनली EMF विल इंड्यूस्ड, करंट विल नॉट इंड्यूस्ड। तो EMF ऑलवेज इंड्यूस्ड, करंट मे बी मे नॉट बी, डिपेंड ऑन द सर्किट। सो इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल, सपोज ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और अंदर कांस्टेंट है, तो EMF विल नॉट इंड्यूस्ड, ओनली लिंक विद ए कॉइल, कॉइल से जो पास हो रहा है। तो इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल एंड EMF और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो एन EMF और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इट इज ए फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा सेकेंड लॉ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज हमारा डेल्टा फाई चेंज हो रहा है, कहीं पर डेल्टा फाई चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड में, और कहीं पर डेल्टा फाई सेम डेल्टा फाई चेंज है 0.01 सेकेंड में, वेयर द EMF इंड्यूस्ड विल बी मोर, द EMF इंड्यूस्ड विल बी मोर इन दिस केस। एज फास्ट एज, जितनी तेजी से हमारा फ्लक्स चेंज होगा हमारा EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। तो EMF मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट शुड बी क्लियर, और वी कैन राइट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब लेंज ने थोड़ा सा इसमें चेंज करा, लेंज लॉ है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट, द EMF और करंट इंड्यूस्ड इन सच ए वे इट अपोज द कॉज बाई विच इट क्रिएट, उसी कॉज को, उसी रीजन को अपोज करता है जिसके कारण वो क्रिएट हुआ है। द EMF और करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इन सच ए वे इट अपोज द कॉज बाई विच इट क्रिएट, सपोज करता है। सो वी राइट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और वी कैन राइट माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और वी कैन राइट माइनस डेल्टा बी ए कॉस थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब क्लियर, एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इज इट क्लियर? नाउ I just give you one example. With the help of example, I explain the Lenz law. Suppose there is a plane where there is a uniform magnetic field. Uniform magnetic field है हमारे यहाँ पे. What it show? Cross. Cross show the direction of magnetic field perpendicular inward. Cross show the direction of magnetic field perpendicular inward. Suppose a coil move toward inside the magnetic field. It is a uniform magnetic field. It move inside. So what happen? As it move inside, flux increase. Or according to Lenz, the EMF induced in such a way, it opposes the cause by which it create. So the EMF induced in such a way, the direction of magnetic field perpendicular outward. अपोज करेगा ना, अंदर ये मूव कर रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉसेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से इंड्यूस्ड करेगा कि अपोज करे। इंक्रीज को अपोज कैसे करेगा? डिक्रीज करके। डिक्रीज कैसे करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करके। अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? विद माई थंब आउटवर्ड। तो करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, the current will flow, induced current will develop anti-clockwise. Is it right? Induced current will develop anti-clockwise because if the induced current is anti-clockwise, the magnetic field will be perpendicular outward. If induced current clockwise, magnetic field will be
perpendicular inward. Now if move inside a magnetic field, suppose B to C, it move. Is there change in any flux? No, there is no change in flux. Number of crosses remains same because there is a uniform magnetic field. So the current induced in this case will be 0. No current will induced because there is a no change in magnetic field. But as it move outward, अभी outward move कर रही है, it move outward, what happen? Flux going to decrease. Flux हमारा decrease हो रहा है. तो when flux decrease, current induced in such a way the direction of magnetic field induced same direction. को decrease को oppose करेगा. किसी चीज़ को decrease को oppose करने के लिए आप क्या करेंगे? increase करेंगे. किसी चीज़ की increase को oppose करने के लिए आप decrease करेंगे. So here the magnetic field induced in this same direction. So in this coil, when it move away, the current induced clockwise. Here current induced anti-clockwise. So if the flux is increasing, what is the conclusion? Flux increase हो रहा है हमारा, तो induced flux, induced magnetic field और magnetic flux in opposite direction. ये चीज़ याद रख लो आप. अगर फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन. इफ फ्लक्स कांस्टेंट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और करंट विल बी 0 और करंट विल बी 0. ठीक है बेटा, इस तरह से आपको याद रखना है. कोई करंट हमारी इंड्यूस्ड होगी ही नहीं इसमें. इज इट क्लियर? अब हम दूसरी तरह से डिस्कस करते हैं. सपोज there is a coil and a magnet move towards the coil. What happened? The coil face north pole of the magnet. So as it move, there is an increase in magnetic flux. Suppose coil is moving, magnet is moving toward the coil, the flux is increasing. Or when flux is increasing, what happened? EMF will induced. EMF induced in such a way, it opposes the cause by which it create. It opposes the cause by which it create. तो मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है जिसके कारण फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. देखिए मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है जिसके कारण फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसके आने को अपोज करेगा, इसे रिपेल करेगा. रिपेल कब करेगा? जब यहाँ लाइक पोल डेवलप होगा. तो यहाँ पे अगर वी सी फ्रॉम राइट साइड, इफ वी सी, अगर हम आंख बना लें यहाँ, इफ वी सी फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ नॉर्थ पोल विल डेवलप. इफ वी सी फ्रॉम दिस साइड, magnet side, the north pole we will appear in the coil. Why? Because it opposes the cause by which it create. It repel magnet. So if we mark the arrow on the end, the current flow in the same direction. The current appear, if we see from the right side, current appear will be anti-clockwise. If we see from here, anti-clockwise. If we see from here, clockwise. Is it right? If the same magnet is moved away, the direction will be reverse. It will attract it. See? Now, next example is, if suppose there is a coil and one wire is passes through its center normal to the coil. Coil के normal एक wire pass हो रहा है and current is flowing through it vertically upward. If current is increasing, this current is increasing, how the magnetic, in which direction current will induced in this coil? In which direction current will induced? देखिए when the current is flowing through wire, the magnetic field developed due to this in this way, in the form of concentric circles. These circles are in the plane parallel to the coil. These circles are in a plane parallel to the coil.
Is it right? So not a single magnetic field lines will linked with a coil. It is parallel to the coil, just like this. देखिए ये coil है, इसके parallel ऐसे in this way the magnetic field developed. Not a single line cross in this way. So the magnetic flux linked with a coil is zero, or induced current will be zero. No induced current. Is it right? No induced current. So in this way you can find the direction of induced current in any circuit. Now if suppose we discuss motional EMF. In motional EMF, suppose there is a uniform magnetic field and a bar PQ move normal to magnetic field. Bar is also in the plane normal to magnetic field and it moves with a uniform velocity. PQ is a bar. ठीक है बेटा? PQ is a bar which move normal to magnetic field. In a plane normal to magnetic field. So what is the direction of magnetic field? Perpendicular inward. So what will be the magnitude of induced EMF? Because it moves either right side or left side, there will be change in flux. So the direction of magnitude of induced EMF is equal to BLV, where BL and V all three are mutually perpendicular. Where BLV all three should be mutually perpendicular. Is it right? Or we can write in vector form. Suppose we take the bar is inclined, then you can use the theta. The magnitude of induced EMF is equal to V cross B with dot product of L. V cross B is V in this direction, B in this direction, inward. So what will be the resultant? Resultant perpendicular to V and B. It may be either opposite or in the same direction of length, and we take the dot product with length. Is it right? The E is equal to V cross B dot of L. It is a vector form. The dot product we will get a scalar quantity. EMF is a scalar quantity. Either all three are perpendicular to each other in simple questions, so you can write E is equal to BLV. How can you find the direction of the current? You can find the direction of induced current if suppose देखिए either Fleming right hand rule, or you can find this bar is moving right side, flux is increasing, the EMF induced in such a way it opposes the cause by which it creates, it is the opposite direction, just like this, outward. If it moves right side, flux is increasing, the current flow Q to P in this way, anti-clockwise. If rod is moving left side, then current flow EMF induced in such a way, the flux due to induced EMF will be in same direction inside. Is it right? So we can find, by this we can find easily, nothing you have to learn any law. By this concept, simple concept, you can find the direction of induced current. Is it right? Now last is, if suppose a bar is rotating in a uniform magnetic field, one end remain fixed. Suppose any bar rotate in a uniform magnetic field with constant angular velocity. Is it right? The magnetic field is uniform, length of bar L, it moves with constant angular velocity. So what will be the induced EMF across the end of the bar? What will be induced EMF across the end of the bar? Induced EMF across the end of the bar, half B L square omega.
half b L square omega. Is it right? If suppose bar is ठीक है बेटा. By this I have discussed all concepts of the induced EMF. Okay beta, bye. In second volume we will discuss the eddy currents or mutual and self induction. So if you like my video, all of you subscribe it. Frequently you will get the video on the other topics also. Okay beta, bye. Jai Hind.